So, good morning, students. I am Deval Verma. I am assistant professor in EBSIT College of Engineering. In this lecture, we will discuss about Rolle theorem and related sub-examples. So, let's start. Yes. So, first of all, briefly some introduction of Rolle's theorem. I introduced here. First of all, yeah. So, Rolle's theorem statement is here. Okay. If a function is if fx is continuous in closed interval ab and differentiable on open interval ab at every point of ab, or f dash x exists at every point of AB, सेकंड एंड ये फर्स्ट कंडीशन हो गई एफ एक्स इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ये सेकंड कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, then there exists at least one value of x say c such that f dash c equals to 0. F dash c equals to 0. Value of x say c, where this c lies between a and b such that f dash c equals to 0. ठीक है, यहाँ नोट है, there may be more than one point like C at which f dash x vanishes. Okay, so graphically we take this theorem in this way. This is your x axis and this is your y axis. Okay, this is some curve here. So these coordinates are a and f a, right, and these coordinates are b comma f b, coordinate of these points. Okay, this is a and this is b. So here we see from this graph that at point A, FA equals to FB, FA equals to FB. If
अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल fx is continuous at close interval ab. From graphically it is noticed that it is continuous, and f dash x exists at every point on open interval ab. So it is also clear that f dash x exists here at all points between ab. So we can, and here we see that fa equals to fb also, fa equals to fb also. Then we say that there exists some point c where f dash x vanishes. Okay, where f dash x vanishes. So this is the geometrical interpretation here. Okay, so suppose that fx is not constant and satisfies the conditions of Rolle's theorem in the interval ab. In the graph, the function fx must have a tangent parallel to x-axis at least at one point between a and b. So this is geometrical interpretation of Rolle's theorem. This is geometrical interpretation of Rolle's theorem. Okay, that is, suppose fx is not constant, and satisfies the conditions of Rolle's theorem in the interval ab. So in the graph, the function fx must have a tangent parallel to x-axis at least one point between a and b. Right? This is geometrical interpretation of Rolle's theorem. Now algebraic interpretation is okay, algebraic interpretation of Rolle's theorem. Let fx is such that close interval ab to r is a mapping which is from this close interval ab to r. So here this is a polynomial function where fa equals to fb. So here this implies a and b are the roots of the equation fx equals to 0. Since a polynomial
fx is continuous and differentiable at every point of its domain. And we have taken fa equals to fp. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर हमारा fx कोई पॉलिनोमियल है तो वो किसी इंटरवल से मतलब रियल नंबर ही आएगा उसमें. fx इज मैपिंग रियल नंबर आ रहा है, इस तरह से इंटरवल से मैपिंग हो रही है ab टू r में. तो इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर अगर आपका fa इक्वल्स टू fb आ रहा है, fa इक्वल्स टू fb, सो दिस इम्प्लाइज a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर ये पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या है, क्या मतलब है इसका कि वो उसके रूट्स हैं. अगर वो उसके रूट्स हैं तो हम ये कह देंगे कि सिंस ए पॉलिनोमियल fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन एंड वी हैव टेकन fa इक्वल्स टू fb. सो दिस इज द एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन. तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में इंटरप्रिटेशन है, राइट. अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function fx equals to x minus 4 to the power 5 x minus 3 to the power 4 in the interval 3-4, राइट. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, fx क्या है, ये पॉलिनोमियल है और इंटरवल दिया हुआ है 3-4 का. इंटरवल दिया हुआ है आपको, क्लोज इंटरवल है ये 3-4 का. तो सबसे पहले आप f3 निकाल लीजिए, क्या आ रहा है, दैट इज 3 minus 4 to the power 5 एंड 3 minus 3 to the power 4 इक्वल टू 0 आ गया. और f4 निकाल लीजिए, तो 4 minus 4 to the power 5 एंड 4 minus 3 to the power 4 अगेन इट इज 0. सो हेयर यहाँ से हम देख रहे हैं सिंस fx इज पॉलिनोमियल, since fx is polynomial and f3 equals to f4, f3 equals to f4 आ गया हमारा. so fx is continuous, so fx is continuous on close interval this 3-4 and differentiable on open interval 3-4, right. now find f dash x, right. ये बात समझ में आ गई ना. ये पॉलिनोमियल था, एल्जेब्रिक फंक्शन था हमारा ये. तो हमने सबसे पहले इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स में f3 और f4 कैलकुलेट करा. तो ये दोनों इक्वल टू 0 आ गए, सेटिस्फाई कर दिया इसने. इट मीन्स ये इसके रूट्स हैं. तो हम बोथ, तो यहाँ पे सिंस अब हमने देखा कि ये दोनों रूट्स इक्वल आ गए इसके. सिंस fx इज पॉलिनोमियल एंड f3 इक्वल्स टू f4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, f3 इक्वल्स टू f4. So fx is continuous on 3-4 and differentiable on open interval 3-4. Now अब यहाँ पर हम f dash x निकाल के देखेंगे कि f dash x क्या आ रहा है. So f dash x is
सबसे पहले यहाँ एफ एक्स लिख लेते हैं दोबारा। एफ एक्स हमारा क्या था, x माइनस 4 टू द पावर 5 एंड x माइनस 3 टू द पावर 4. So f dash x, so this is product of two functions. So x minus 4 to the power 4, x minus 3 to the power 4 plus x minus 4 so here 5x minus 4 to the power 4 and x minus 3 to the power 3 taking common here, then this is x minus 3. Okay, 5 is inside the bracket. Five x minus 3 minus plus 4 x minus 4. The calculation is, after solving this we get 0. Okay, so here f dash x after solving this yeah, so f dash x is coming here x minus 4 to the power 4, x minus 3 to the power 3, and this is 9x minus 31. Okay, so for Rawls theorem statement, f dash x equals to 0 at C. By Rawls theorem, f dash x equals to 0 at C. So here we take here f dash c equals to 0. So this implies, putting here at x equals to c, f dash c equals to c minus 4 to the power 4, c minus 3 to the power 3 and 9c minus 31 equals to 0. This implies, after solving these roots, we get c equals to 3, 4 and 31 by 9. Okay, these are the values of c. So here at these points f dash c equals to 0. So we in starting of Rawls theorem we discussed that हमें मोर देन 1 पॉइंट हमें एक से ज़्यादा सी मिल सकते हैं जहाँ पर एफ डैश सी वेनिश हो जाए. तो इन पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स वेनिश हो जाएगा. एट 3 पर भी वेनिश होगा, 4 पर भी वेनिश होगा और 31/9 दैट इज 3.44 इस पॉइंट पे भी वेनिश होगा. ओके, सो दिस इज द आंसर एंड Rawls theorem इज वेरीफाइड. तो ये तो वेरीफाइड का एग्जाम्पल हो गया आपका Rawls theorem का, राइट. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें. डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ Rawls theorem. Discuss the applicability
appreciability of Rolle's theorem for fx equals to 2 plus x minus 1 to the power 2 by 3 in the interval 0 to, right? Solution. Appreciability of the Rolle's theorem for the function in the interval, closed interval 0 to. So we have fx equals to 2 plus x minus 1 to the power 2 by 3 and in that is 0 2. So here सबसे पहले f0 देख लेते हैं क्या आ रहा है. f0 equals to that is 2 plus 0 minus 1 to the power 2 by 3 equals to 3 and f2 is what? That is 2 plus 2 minus 1 to the power 2 by 3. It is again 3. Since fx is an algebraic function of x, then it is continuous in closed interval 0 to. Now यहाँ से हमें ये पता चल गया कि f0 इक्वल्स टू f2 आ गया इसका. और दूसरी चीज़ ये कि अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. 0 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन है. अब इसका हम देख लेते हैं. नाउ f डैश x डिफरेंशिएबिलिटी का और चेक कर लेते हैं. f डैश x इक्वल्स टू that is 2 by 3 x minus 1 to the power minus 1 by 3. अब यहाँ से हमें दिख रहा है here we see that f dash x does not exist at x equals to 1 in the open interval in this, or we can say open interval 0 2, right? तो यहाँ पर at x equals to 1 पर ये undefined function हो गया ना, f dash x not exist. So here this implies fx is not derivable at 0 2. Hence Rolle's theorem is not applicable. Hence Rolle's theorem is not applicable. These are the some exercise here. Number 1, verify. You have to verify Rolle's theorem. Number first, fx is x cube minus 4x between interval 2 minus 2 to 2, and fx
equals to e to the power x sin x minus cos x in closed interval pi by 4 5 pi by 4. Okay, so thank you all of you. So in this lecture, these are the exercise of related to questions Rolle's theorem. This is the example where Rolle's theorem is not satisfied here. This is the example where Rolle's theorem is verified. Both are algebraic functions, but one is differentiable and other is not differentiable here on the given interval. This is the algebraic interpretation. This is geometrical interpretation. This is the statement of Rolle's theorem. So thank you all.